In today's class, we discuss electric potential and electrical energy of electrostatic field and how we can calculate this. This portion we have to see. Electric potential, electric potential and energy. This is the today's topic of discussion. Firstly, we see what is potential. As we know that potential is nothing but the work done required to move a unit charge from infinity to ground. This is the basic definition of the potential. Now this potential can be expressed in terms of charge and distance. It is a scalar quantity. V is equals to Q upon 4 pi epsilon naught R. Now this is the most simple formula for calculating the potential due to any charge. Now we can make it more simple. V is equals to, it is 1 upon 4 pi epsilon naught in the bracket into Q upon R. Now 1 upon 4 pi epsilon naught is nothing but a constant, as we know that it is nothing but 9 into 10 to the power 9. So the calculation will become more simple. V is equals to 9 into 10 to the power 9 into Q upon R. This is the potential in volts. अब हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी चार्ज अपने ऊपर पोटेंशियल नहीं लगा सकता, ठीक है। उसके कारण पोटेंशियल किसी दूसरे पॉइंट पर लगाया जा सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि दिस इज अ पॉइंट चार्ज, द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज इज 4 नैनो कूलम, ओके, एंड इट इज लोकेटेड एट लेट्स से 0 0 0 मींस origin, and let me find the potential at this particular point, let's say P, this is point O, and the coordinate of point P is nothing but 340. Okay, is it clear to everyone? Charge is placed at point O, the coordinates are 0 0 0, the volume of the charge, the magnitude of the charge is 4 nanocoulomb, and we have to find out the potential at point P, and the location of the point P is nothing but 340. So our first job is to find out the distance between the charge and the point of interest. Okay, so let me write the expression for this R. R can be equal to, हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, 340 minus 0 0 0. In this way we can make the vector. 3 minus 0 is 3ax, 4 minus 0 is 4ay, and 0 minus 0 is 0az. Okay, so the vector of our interest is nothing but R is equals to 3ax plus 4ay. But as I told you, potential is nothing but a scalar quantity. So definitely we are not interested to calculate the vector. We are only interested in the magnitude of the vector. But magnitude of the vector can only be determined when vector is known to us, or otherwise the magnitude is given to us. So magnitude of this particular vector is nothing but root over 3 square plus 4 square, 9 plus 16 25 square root is 5. So this is 5. Let's say meter. Okay? If the coordinates are given in meter, it is also in meter. So the magnitude of the distance is 5 meter. Now we have to calculate this potential V. Now the formula is 9 into 10 to the power 9 multiplied by charge. Charge की वैल्यू कितनी है? 4 nanocoulomb, 4 into 10 to the power minus 9, and divided by R का magnitude. I should write modulus of R here. Okay, here also and here also you can make this particular change. So this is nothing but 5 meter. So 10 to the power 9 and 10 to the power 9 is 9. Cancel out each other. 4 9 is 36. 36 divided by 5. So this is nothing but 7.2 volts. So I can say that this charge of 4 nanocoulomb value creates a potential of 7.2 volt at the point P if we know the coordinates of both the point, coordinates of the charge and coordinates of the point at which the potential is desired. Okay, so I think it is clear to everyone. It's a very simple calculation. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा चार्ज हैं, ठीक है, सपोज वी हैव टेकन 2 चार्जेस ओवर हियर, ठीक है,
और डिस्टेंस हमें दिया भी जा सकता है और कोऑर्डिनेट दिया है तो हम डिस्टेंस निकाल भी सकते हैं, तो दोनों स्थितियां संभव हैं। Here it is a charge of 10 nanocoulomb. Here it is a charge of let's say 40 nanocoulomb. Okay, the coordinates are let's say 2, 3, 5, and here the coordinates are let's say 10, 9, 5. Okay, so let me calculate the distance between these 2 point charges. Okay, the first thing, objective should be clear to us what we have to achieve, what we have to determine in this particular problem. So we have to determine potential, let's say this is point P, this is Q, potential at both the charges, potential at both the charges, दोनों चार्ज पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये है हमारे ऑब्जेक्टिव। कोई भी प्रॉब्लम आप बना रहे हैं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमें क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे उसको लेकर के। तो ऑब्जेक्टिव है पोटेंशियल एट बोथ दी चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो आइए मैं पहले बात करता हूं पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो आप देखेंगे प्रॉब्लम में पॉइंट पी पे हमने कौन सा चार्ज रखा है, 10 नैनोकूलम। तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 नैनोकूलम का चार्ज अपने ऊपर तो पोटेंशियल लगाएगा नहीं, तो उस पर पोटेंशियल लगाएगा कौन, दूसरा चार्ज जो कि सिस्टम में रखा है 40 नैनोकूलम का। ठीक है, and let me clear this particular concept. It is very important to determine the distance between both. Okay, again we have to form the vector. Let's say 10, 9, 5 minus 2, 3, 5. It's very simple, we can make this 10 minus 2 is 8ax and 9 minus 3 is 6ay, 5 minus 5 is 0. So the modulus of r is nothing but the 10. 8 का square 64, 6 का square 36, 36 plus 64 is 100 का square root 10. So it's very simple. Now अब मैं पॉइंट P पे चार्ज की बात कर रहा था, तो फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब क्या बचा, Q अपॉन R। Q कौन सा रखना है हमें, जिस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल लगाया जा रहा है वो चार्ज रखना है। तो कौन सा चार्ज पोटेंशियल लगा रहा है, 40 नैनोकूलम का। सो आई शुड राइट 40 इंटू 10 की पावर माइनस 9, क्योंकि हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं P पे, और P पे कौन सा चार्ज मौजूद है, 10 नैनोकूलम का। तो जो चार्ज P पे ऑलरेडी रखा है वो अपने ऊपर ही तो पोटेंशियल लगाएगा नहीं, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा दूसरे चार्ज के द्वारा लगता है जो कि सिस्टम में हो, या दूसरे तमाम चार्जेस के कारण लगता है जो कि सिस्टम में मौजूद हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ R इज 10। नाउ इट्स वेरी सिंपल, 40 into 9 360 divided by 10 is nothing but 36 volt. So what is the amount of the potential at the point P is 36 volt. Okay, let me calculate the potential at point Q. Okay, या फिर ये कह लें कि 40 नैनोकूलम पे कितना पोटेंशियल है वो निकालना चाहते हैं। सो अगेन इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. ओके, सो दिस इज ऑल्सो आई कैन राइट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, अब Q पे अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल कौन लगाएगा, दूसरा चार्ज लगाएगा, कौन सा, 10 नैनोकूलम। सो आई शुड राइट 10 into 10 to the power minus 9 and divided by modulus of R. What is modulus of R? 10. So again this will cancel, 10 9 is 90 by 10 means 9 volts. Okay, so now we have the potential at point P as well as at point Q, and now we have to calculate the electrostatic energy. As I already stated, this is one of the objectives. Okay, so this is, let's say, WE, electrostatic energy. The formula is very simple to remember, 1 by 2 sigma QI VI I equal to 1 to n. ठीक है, ये मैंने एक जनरल स्टेटमेंट लिख दिया कि अगर किसी सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और उन n नंबर ऑफ चार्जेस पे n नंबर ऑफ पोटेंशियल्स हैं, तो हम n नंबर ऑफ चार्जेस और n नंबर ऑफ पोटेंशियल्स की मदद से एक एनर्जी सिस्टम की कैसे निकालेंगे, उसका ये फॉर्मूला है। प्लीज कीप इन माइंड और उसको दिमाग में बैठा लीजिए। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WE is equals to 1 by 2 sigma I is equals to 1 to n QI VI. Okay, so this is the equation which we are going to use for the further calculation. Remember, how many charges are here? Only 2. So the limit of I should be 1 to 2.
So the formula will become WE is equals to 1 by 2 Q1 V1 plus Q2 V2. Now we have both the charges 10 nanocoulomb and 40 nanocoulomb. We have both the potentials 36 volt and 9 volt. So we can calculate the energy. Okay? So this WE is equals to 1 by 2. I can write Q1 V1 plus Q2 V2 in a bracket क्योंकि 1 by 2 बाहर है सिग्मा के. Okay? सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 2. Q1 चार्ज कितना है देख लेते हैं पिछली स्लाइड से 10 नैनोकूलम और उस पर पोटेंशियल कितना है 36. सो दिस इज 10 नैनोकूलम. नैनो मतलब 10 की पावर माइनस 9 और पोटेंशियल कितना आया उस पर 36. ओके प्लस Q2 चार्ज हमारा कितना है 40 नैनोकूलम. पोटेंशियल कितना आया 9 वोल्ट. सो दिस इज 40 नैनोकूलम 40 इंटू 10 की पावर माइनस 9. ठीक है और पोटेंशियल कितना आया उस पर पोटेंशियल आया हमारा 6 वोल्ट ना 9 वोल्ट सॉरी 9 वोल्ट. सिंपल. सो दिस इज इक्वल्स टू देखिए 1 बाई 2 10 की पावर माइनस 9 को तो बाहर ही कर लेते हैं हम. 36 इंटू 10 360 40 इंटू 9 360 360 प्लस 360 मीन्स 720. Now 720 by 2 is nothing but 360. 360 into 10 की power 9 minus 9. You can simply write 360 nanojoule because that is the energy and unit of the energy is nothing but the joule. So we can say that potential at point P is equals to 36 volt. This is one of the answers. Potential at the second charge is equals to 9 volt. This is second answer. Okay, I can write this is first, this is second, and this is third answer of this particular problem. I think I made your concept clear with the help of this example. For introducing some more complexity in the problem, let me take another objective, another case where the three charges are present. Okay, let's say this is a triangle, an equilateral triangle. Okay, and the vertices are A, B and C. Okay, three charges are placed over here. Let's say Q1 Q2 Q3. ठीक है and distance between the two charges, since it is an equilateral triangle, let's say each one is of 2 meter. Okay, this is 2 meter, this is 2 meter, this is also 2 meter. So I should write modulus of r is equals to 2 meter. Whenever and wherever required, use mod r is equals to 2 meter. Now Q1 Q2 Q3 प्रॉब्लम में आपको सेम भी दिए जा सकते हैं, डिफरेंट भी दिए जा सकते हैं. लेट मी टेक सम आर्बिट्ररी वैल्यूज ऑफ Q1 Q2 Q3. 10 nanocoulomb, Q2 is 20 nanocoulomb, Q3 is 30 nanocoulomb. And the question is, find the potential at the vertices A, B and C and also calculate the entire electrostatic energy of the system that is represented by WE. Okay, so I think I made the question clear to each and everyone. We have to find the potential at all the three vertices as well as the electrostatic energy of the system. तो आइए पहले हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एट ए. तो जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया पिछले सवाल में भी कि हमें किसी भी पॉइंट पे चार्ज निकालना है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो उस पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज अपने ऊपर पोटेंशियल नहीं लगा सकता. क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा है तो उस चार्ज का अपने से डिस्टेंस क्या हो गया 0 और बिना डिस्टेंस के पोटेंशियल नहीं आएगा. ठीक है, तो बाकी बचे हुए दो चार्ज उस पर पोटेंशियल लगा सकते हैं. तो VA जब हम निकालेंगे तो इट इज बिकॉज ऑफ Q2 एंड Q3. सो आई कैन राइट VA इज अ फंक्शन ऑफ Q2 एंड Q3. ओके, अब इसको लिखना कैसे है वो देख सकते हैं आप. दिस विल बी Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आर तो सेम है सबके लिए, प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आर, अगेन दिस आर इज सेम. ओके, सो वेयर इज द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, Q2 एंड Q3 आर डिफरेंट, तो Q2 Q3 को हम ऐड कर लेंगे. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पावर 9 और मॉड आर हमारा 2 है तो 1/2 ये हमने बाहर ले लिया. अंदर बचा Q2 प्लस Q3. Q2 की वैल्यू कितनी है 20 और Q3 की वैल्यू कितनी है 30 एंड बोथ आर इन नैनोकूलम मतलब 10 की पावर -9. I think the calculation is very simple and it is clear to each and everyone.
let me calculate the values. Okay, 10 to the power minus 9 plus 9 cancel out, 20 plus 30 50, 50 by 2 is 25, 25 9 ja 225, because 25 10 ja is 250, 25 9 ja 225. So I can say that the potential at the point A is 225 volt. Okay, similarly we can calculate the potential at the point B. और बी पे जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो ये किसका फंक्शन होगा, आप देख सकते हैं प्रॉब्लम में, बी पे जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो वो Q1 और Q3 का फंक्शन होगा. सो इट इज अ फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q3. नाउ आई कैन सिंपली राइट दिस इज Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड r प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड r. ओके, सो अगेन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, दैट इज 9 into 10 power 9. 1 upon mod r कॉमन कर लिया, mod r is 2 1 by 2. In the bracket I am having Q1 and Q3, and as we have the values, Q1 is 10 nanocoulomb and Q3 is 30 nanocoulomb, so I can simply write 9 into 10 power 9 into 1 by 2 into 10 and 30. This is simply 40 nanocoulomb. 40 into 10 power minus 9, this will cancel out, 29 ja 180 volt. Okay, so we have VB also. Similarly we can calculate VC, which is a function of definitely Q1 and Q2. You can see from this particular diagram from the previous slide. C पे जब आप पोटेंशियल निकालेंगे तो वो Q1 Q2 के कारण निकलेगा. And again I can write the expression, this is Q1 upon 4 pi epsilon naught mod r plus Q2 upon 4 pi epsilon naught mod r. Okay, so again 1 upon 4 pi epsilon naught mod r बाहर आ गया. So this is 9 into 10 to the power 9 into 1 by 2. In the bracket I have Q1 plus Q2. And what are these values of Q1 and Q2? 10 and 20 nanocoulomb. So 10 plus 20 is none other than 30. So 30 nanocoulomb 10 to the power minus 9. This will cancel out. 30 into 9 is 270 by 2 is 135. Okay. So we have the potential at point A, point B and point C. With the help of this, I can write VA is how much? 225 volt. Okay, what is VB? VB is I think 180. Yes, 180 and 135. So VB is 180 volt. And what is VC? VC is 135 volt. Once we have the potential at all the vertices of the given equilateral triangle, now we can talk about the total entire electrostatic energy of the system, and that is none other than WE is equals to 1 by 2 sigma I is equals to 1 to n QI VI, as I told you earlier. Now the value of I varies from 1 to 3. So this will be Q1 V1 plus Q2 V2 plus Q3 V3. So very simply we can expand this particular expression and we will get Q1 V1 plus Q2 V2 plus Q3 V3. And as we know that the charges are 10, 20 and 30 nanocoulomb respectively. So I can simply common out, nano means 10 to the power minus 9. Okay, in the bracket we have Q1 is 10, so 10 into V1 is 225 plus Q2 is 20 nanocoulomb, 10 to the power minus 9 common ले लिया, V2 is 180 plus Q3 is 30 nanocoulomb into V3 is 135. Okay, this much we have to calculate. 10 to the power minus 9 divided by 2, इसको calculate करते हैं. 225 into 10 is 2250 plus 20 into 180, 80 into just 36, 3600, and 135 into 3, 405. Okay, 405, 405. Okay, 13 3 ja 390, 390 and 5 3 ja 15, 390 and 15 is 405. Correct, 4050. So now I can make the sum of this: 4000, 3000, 7000, 2000, 9000, 9000, and this is 800, 900, 9900. Okay, 50 50 100, 2300, 6 2900, 29 plus 3000 is 5900 plus 4 9900. Okay, so this is 9900 into 1 by 2 into 10 to the power minus 9. So this will be equal to 2 2 4 ja 8, 2 4 ja 8, and again 2 9 ja 18,
and 2 5 are 10 and 0, okay, into 10 to the power minus 9. So I can simply write this is 4950 nanojoule, okay. So in this way we can calculate the total entire electrostatic energy of this particular system. So I think I made it clear to you how to calculate the potential at the various point and how to calculate the energy of the electrostatic system, okay. Again we have a look to the previous slide. This is the very simple formula, V is equals to Q upon 4 pi epsilon naught mod R. Once we have the potential we can calculate the energy, but energy calculate करने के लिए कम से कम 2 चार्ज हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक चार्ज दूसरे पे पोटेंशियल लगाएगा, दूसरा चार्ज पहले पे पोटेंशियल लगाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम एनर्जी निकाल सकते हैं। और अदरवाइज एक चार्ज के द्वारा अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो दूसरा पॉइंट चाहिए जहाँ पे हमें पोटेंशियल आएगा, and once we have potential we can calculate the energy, okay. So with the help of these examples we can very well understand this particular process of calculating the potential and energy of a particular system. Thank you very much.